Hello students, this is a chemistry lecture and this is your last lecture of chemical bonding. In last lecture, we have studied about two theories. One is VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory, and another one is VBT theory, that is called as the valence bond theory. Now in this lecture, we are going to discuss our next and last theory, that is called as the molecular orbital theory. Now first of all, see the limitations of VSEPR and valence bond theory. Why this molecular orbital theory is discovered? The Lewis structure, VSEPR theory and the valence bond theory are normally satisfactory for describing covalent bonding and molecular structure. That means in Lewis structure we have seen about the structure of molecule, VSEPR theory in that also, and valence bond theory also. On the basis of covalent bonding, right? But these theories have some limitations, and these limitations are overcome by a molecular orbital theory. Now, what are the limitations of these theories? So, firstly, they cannot explain the nature of oxygen, whether it is paramagnetic or diamagnetic. According to valence bond theory, oxygen is a diamagnetic in nature. Okay, but experimentally it is proved that the oxygen is paramagnetic. So oxygen का जो nature है paramagnetic, वो VSEPR theory या valence bond theory ने explain नहीं किया है. वो बोले कि वो diamagnetic है, but actually it is paramagnetic in nature. So this is our first limitation. Now again, valence bond theory and VSEPR theory doesn't explain the stability of molecule, right? H2 molecule, H2 plus, H2 minus molecule, ये जो molecules है इनकी stability के बारे में valence bond theory ने कुछ भी explain नहीं किया. Again, explanation for the electronic spectra, जो different compounds तैयार हो रहे थे, molecules तैयार होते, उनके electronic spectra के बारे में भी अपने को valence bond theory और VSEPR theory ने कुछ भी explain नहीं किया. Again, valence bond theory explain only the formation of covalent bond in the shared pair of electron, right? But this theory cannot explain explain about the coordinate bond, formation of a coordinate bond, right? So these are the some limitations of valence bond theory and VSEPR theory. Now, what is about molecular orbital theory? Molecular orbital theory is related with the molecular orbitals. In VSEPR theory and valence bond theory, we have already discussed about the formation of covalent bond by overlapping of half-filled atomic orbitals, right? आप लोगों को याद होगा कि by the overlapping of half-filled atomic orbitals, formation of covalent bond हम लोगों ने डिस्कस किया था. In this theory, in molecular orbital theory, here we have to use atomic orbitals replacing by a molecular orbitals. That means the molecular orbital theory describes the covalent bond in a molecule by replacing atomic orbitals of component atoms by molecular orbital. जैसे valence bond theory बोलती है कि covalent bond form होता है by the overlapping of atomic orbitals, atom के atomic orbitals, right?
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऐसा होता है कि उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कारण यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. A set of rules is used to assign the electrons in this molecular orbital, thereby yielding a electronic structure of the molecule. Again, these molecular orbitals जो तैयार हो रहे having a mathematical functions and they accommodate two electrons with opposite spin. Like atomic orbitals, molecular orbitals में भी दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो कैसे होंगे अपोजिट स्पिन्स के अपोजिट स्पिन से ही होंगे. वो कोई एक ऑर्बिटल में कोई भी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. राइट, वो आप लोगों को याद होगा. Now see, the concept of this orbital is introduced by the quantum mechanics. That means this theory is based on the quantum mechanics and quantum mechanics is the part of physics. So थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे molecular orbital theory से related जो है. This quantum mechanical wave equation is a differential equation and its solution is called as the wave function. That means this molecular orbital theory is based on the wave function. The square of wave function gives a measuring probability of finding of electron within a certain region of a space of an atom. And this wave function is denoted by a psi. Molecular orbitals span two or more atoms and molecular orbitals are formed by the linear combination of atomic orbitals. See here, as you can see on the screen, this is consider these two are the orbitals. ठीक है, एक को नाम दिया 1s A, दूसरे को नाम दिया 1s B. So whenever that is called as the linear combination of atomic orbitals. Now whenever these two atomic orbitals are combined, so this combines by two ways. One way is it undergo addition and another way is it undergo subtraction. ठीक है, जब एडिशन होती है तो क्या होता है और सब्सट्रैक्शन होती है तो क्या होता है. So firstly, by the addition of their wave function, addition of atomic orbital functions results in the formation of a molecular orbital which is lower in energy than the atomic orbitals. So addition of the atomic orbitals wave function results in the formation of a molecular orbital which is lower in energy than the atomic orbitals. As you can see on the screen here, whenever these two atomic orbitals are undergo addition, so एक नया molecular orbital यहाँ पे तैयार हो रहा है जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस होगी और उसको हम लोग बोलेंगे psi is equal to psi1 plus psi2 to 1s wave function combined by the constructive interference. Whenever addition takes place, it undergo constructive interference. मतलब two waves, अब ये wave function पे depend कर रहा है ना. आप लोगों ने physics में देखा ही होगा, दो waves रहते हैं, right? Crest and trough. तो crest में ऐड हो जाएगा, trough में आ जाएगा और दो बड़े lobes तैयार हो जाएंगे. That is called as the constructive interference. Similarly, these two atomic orbitals are undergo subtraction, right? When it undergoes subtraction, results in the formation of molecular orbital which is higher in energy than the atomic orbitals and which is called as the antibonding molecular orbital. Whenever these two atomic orbitals are undergo subtraction, it produce again molecular orbital जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी than this atomic orbital. So जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी
इसको हम लोग बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एडिशन से तैयार हो रहे दैट इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके आगे हम लोग यही यूज करेंगे BMO दैट इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ABMO that is called as anti-bonding molecular orbital. And whenever it undergo subtraction, two waves subtract हो जाएंगे, so it produces destructive interference. Okay, destructive interference. Now, in bonding molecular orbital, it describes the region of high electron probability or charge density in the intermolecular region between two bonded atoms. That means the probability of finding of electrons is more in bonding molecular orbital. Because in bonding molecular orbital, the large electron density is observed between two nuclei of the bonding atoms than the individual atom. And on the other hand, antibonding molecular orbital describes the region in which there is low electron probability or charge density between two bonded atoms. मतलब कि in case of antibonding orbital, the electron density nearly zero between the nuclei. क्योंकि वो subtract हो रहे ना, तो वो एक लोब एक दूसरे लोब से माइनस हो जाएगी और नीचे की लोब दूसरे लोब से माइनस हो जाएगी, तो वहां पे तो कुछ भी बने बचेगा. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लो रहेगी और नियरली जीरो ही रहेगी बिटवीन टू न्यूक्लियर. सो यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर का जो है इन नोड और द रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो दिख रहा है नीचे का पूरा जीरो ही है, और ऊपर का सम ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोब्स भी बड़े हो गए. सो in case of bonding molecular orbital there is a possibility of finding of electron is more, and in case of anti-bonding molecule there is zero electron density. Okay, so anti-bonding molecular orbital हम लोग उसको एस्टेरिक से डिनोट करते हैं. एस्टेरिक मतलब स्टार से, और बॉन्डिंग को कुछ नहीं. Now the properties of molecular orbitals means ये जो molecular orbitals यहाँ पे तैयार होंगे तो उनकी properties क्या होगी. See, the number of molecular orbitals are formed is equal to the number of atomic orbitals combined. अब यहाँ पे जितने molecular orbitals तैयार होंगे उनका नंबर कितना होगा. जितने atomic orbitals combined होंगे उतने molecular orbitals तैयार होंगे. If two atomic orbitals are combined, two molecular orbitals form, right? क्यों? Because अभी हम लोगों ने देखा कि whenever two atomic orbitals are combined are overlap, right? atomic orbitals, तो वो subtraction भी होता है और addition भी होता है, right? subtraction, एक subtraction होगा तो एक molecular orbital form होगा, एक addition होगा तो दूसरा molecular orbital form होगा. एक bonding molecular orbital रहेगा, दूसरा anti bonding molecular orbital रहेगा. मतलब दो जा रहे तो दो ही form हो रहे ना. So that's why the number of molecular orbitals that is called as MOs form is equal to the number of atomic orbitals combined. Two MOs form when two atomic orbitals are combined. One is bonding having a low energy and one is an anti-bonding having a higher energy, जो भी मैंने आपको बताया. In the ground state, electrons enter the lowest energy MO available. अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग करते हैं तो एज वी नो जिसकी एनर्जी छोटी है तो वो लोअर स्टेट में रहेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो हायर स्टेट में रहेगा, राइट? जैसे देखो कि बहुत सारा खाना खा लिया, अगर आपने लंच ब्रेक में बहुत सारा खाना खा लिया तो बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, तो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं हम लोग, राइट? आप लोग बच्चों, तो आप इसके बाद इतनी एनर्जी आ जाएगी कि इसको मारो उसको मारो, इसके साथ मस्ती करो उसके साथ मस्ती करो, राइट? चुपचाप बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे, तो होगी हायर एनर्जी. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे हायर एनर्जी से एक्साइटेड रहेंगे तो वो पोजीशन भी उनकी हाई रहेगी. और वही अगर आपको भूख लगी है और आपको कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है तो आपकी एनर्जी तो डाउन हो जाएगी ना, तो आप चुपचाप एक जगह पे बैठे रहोगे, मस्ती करोगे? नेवर. सो इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी इज लो, सो लोअर एनर्जी है तो उनकी पोजीशन नीचे रहेगी. सो इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द लोवेस्ट एनर्जी MO available.
molecular orbital available. Now filling of electron कैसे होगा? By using two rules. One rule is by Pauli's exclusion principle and another one is Hund's rule. So filling of electron takes place by obeying Pauli's exclusion principle. और Pauli's exclusion principle क्या बोलता है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं? मैक्स टू मैक्स ओनली 2 electrons, right? Only 2 electrons can occupy the same orbital and they must have a opposite spin. Pauli's exclusion principle क्या बोलता है कि only 2 electrons can occupy one orbital and the spin of that electrons must be opposite. अपोजिट होना चाहिए, एक का अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो दूसरे का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. अगेन it also obey the Horn's rule because in ground state electrons enters in a degenerate orbital singly before pairing up. इसका मीनिंग क्या होता है कि Horn's rule क्या बोलता है अपने को कि pairing of electron in the orbital belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each. That means कि पहले तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होने जितने ऑर्बिटल्स है उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं और फिर बचे हुए हम लोग उसको पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. दैट इज नथिंग बट ए हर्ट्ज रूल. तो यहाँ पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दो रूल से ही होगी. नाउ द एनर्जी लेवल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसा होता है? सी, we have seen earlier that in combination of two 1s orbital, two molecular orbital, sigma 1s and sigma 1s are formed. Similarly, two 2s orbital yield sigma 2s star and sigma 2s molecular orbital. See, यहाँ पे whenever atomic orbitals are combined, तो वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो जैसे अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं 1s1, 1s2, 2s1, 2s1, 2p6 लाइक दैट, ऐसे स्टार्ट होता है ना. अब वो प्रिंसिपल जो बोलता है तो यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने को सिग्मा बॉन्ड के जगह पे सिग्मा लगाना है और जो पाई बॉन्ड रहेगा वहाँ पाई बॉन्ड लगाना है. सो अगर 3 2p ऑर्बिटल्स है ऑन वन एटम एंड दे कंबाइन विद 2p ऑर्बिटल्स on the another atom forming 6 molecular orbital designated at sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi py and sigma star 2pz, pi 2px, pi star 2py. ठीक है. सो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को इसी फॉर्म में लिखना रहेगा. The molecular orbitals in the homonuclear diatomic molecules have been determined experimentally. For diatomic molecules of second row element except O2 and F2, the rank order of energies is sigma 1s की एनर्जी छोटी रहेगी देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s which is less than sigma star 2s which is less than pi 2px equal to pi 2py. ये दोनों की एनर्जी सेम रहेगी इसलिए मतलब इक्वल साइन है. which is less than sigma 2pz which is less than pi star 2py which is equal to the pi star 2px and less than sigma star 2pz. अगर O2 और F2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज क्या रहेगी? सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s which is less than sigma 2s then sigma star 2s. ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s क्या है? वन इज बॉन्डिंग अनदर वन इज एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग की एनर्जी छोटी रहेगी, एंटी बॉन्डिंग की एक्साइटेड स्टेट में रहेगी तो वो ऊपर की पोजीशन में रहेगा. ये आप लोग हम लोग जब एमओ डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टाइल ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. बट आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम H2 की है, बाकी सब ओमिट किया गया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ही दिया हुआ है. So here, molecular orbital diagram shows the energy level of the isolated atoms to the left and right of the molecular orbitals of the molecule. See, this is increasing energy, right? ये यहाँ से यहाँ increasing energy from ground to upward, downward to upward. अब 1s H2 का कंसिडर करो कि H2 मॉलिक्यूल है, हम
लोग H2 को कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन से ऐसे। तो एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, राइट। नाउ this is atomic orbital of one hydrogen atom, this is atomic orbital of another hydrogen atom. Now they are undergo first subtraction, first addition then subtraction. एडिशन जैसी होती है तो अपने को मिलेगा सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी छोटी रहेगी इसलिए हम लोग नीचे रखें इसको, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड ए सिग्मा स्टार 1s। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसका अपोजिट स्पिन, और पहले हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलीजन हॉर्न्स रूल, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। हो गया। ऐसा तैयार होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम शो द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम। हाइड्रोजन के हम लोग आगे देखेंगे। A stable molecular species is one of that has more electrons in bonding molecular orbital than the anti-bonding molecular orbital. इसका मीनिंग क्या होता है कि स्टेबल मॉलिक्यूलर स्पीसीज कौन सी होती है जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी डिसाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग देखते थे बॉन्ड ऑर्डर में मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड्स भी फ्रैक्शन में रहते हैं, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, 3.5 बॉन्ड ऑर्डर, लाइक दैट, राइट। सो बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों को अगर निकालने ही इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? half the difference between the number of electrons in bonding and in anti-bonding molecular orbital in covalent bond. That is the formula which is used to calculate bond order. क्या है formula? Electrons in molecular orbital, bonding molecular orbital minus electrons in the anti-bonding molecular orbital divided by 2. That is the formula which is used to calculate bond order. Now see the molecular orbital diagram for hydrogen. So this is increasing energy. This is 1s electron of one hydrogen atom, 1s electron of another hydrogen atom, AOs of hydrogen, यहाँ पे देखो AOs of hydrogen, and they are undergo first addition, they may undergo after that subtraction. तो जैसे एडिशन होती है तो अपने को मिलेगा सिग्मा 1s, सब्सट्रैक्शन होती है तो सिग्मा स्टार 1s, एंटी बॉन्डिंग रहेगा ये ऊपर का, नीचे का रहेगा बॉन्डिंग। अब एक ऑर्बिटल में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ही रह सकते विद अपोजिट स्पिन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, अब दो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले एक फिर उसके बाद पेयरिंग, राइट। तो अपने को क्या मिलेगा? सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s0, इधर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो द बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगी हाइड्रोजन की? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल फॉर्मूला लिख लो। हाफ क्या रहता है फॉर्मूला? इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। ये रहेगा हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कितने हैं? 2, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल 0। सो 2 minus 0 2, और ये 2 कैंसिल होके बचेगा 1। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। सो इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? H, सिंगल बॉन्ड H। तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई? 1। Okay, so this is all about the molecular orbital theory. Now our last topic parameters of covalent bond. If there are number of parameters like bond length, bond angle, bond enthalpy, bond order, bond polarity, that is polarity of covalent bond, dipole moment, and covalent character in the ionic form. And last is resonance. So see one by one. Bond length. First parameter is the bond length. Now bond length क्या रहती है?
Bond length is the equilibrium distance between nuclei of two bonded atoms. सिंपल. बॉन्ड लेंथ मतलब क्या होगा कि ये एक न्यूक्लियस है एक एटम का, ये न्यूक्लियस है दूसरे एटम का, इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ. ओके. The covalent radius is half of the distance between two similar atoms joined by the covalent bond in the same molecule. यहाँ से अगर हम लोग इसको हाफ कर दे तो दिस इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट रेडियस. मतलब एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा बिटवीन कोवैलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम जॉइंड बाय कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट रेडियस. Van der Waals radius is the half of the distance between two similar atoms. Half of the distance between two similar atoms in a separate molecule in solid. Half of the distance between two similar atoms. जैसे ये similar atoms है, इनका जो half distance रहेगा, that is called as the Van der Waals radius. ये देखो half distance called as the Van der Waals radius. It is called as Van der Waals radius. Next is bond angle. Bond angle is defined as the angle between orbitals containing bonding electron pairs around a central atom in a molecule. In simple language, the electrons which participate in bond formation are present in the orbitals, and the angle between the orbitals holding the bonding electrons is called as bond angle. ठीक है. मतलब जो एंगल है किसके बीच का ऑर्बिटल्स को जो होल्ड करके रखे हैं उनको बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल. इट गिव्स सम आइडिया रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड हेंस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग इट्स शेप्स. जैसे हम लोगों ने देखा था मीथेन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री, देन बिकॉज ऑफ लोन पेयर डिस्टॉर्शन हुआ तो एमोनिया का 107 डिग्री हुआ, एंड इन केस ऑफ वाटर इट बिकम 105 डिग्री. राइट. Now the next is bond enthalpy. Bond enthalpy is the amount of energy required to break one mole of bond of one type present between two atoms in a gaseous state. It is defined as the amount of energy required to break one mole of bond of a particular type between two atoms in gaseous state. एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एंथैल्पी. The unit of bond enthalpy is kilojoule per mole. It is very important that larger the bond dissociation enthalpy, stronger will be the bond in the molecule. जितनी ज़्यादा bond dissociation enthalpy रहेगी उतना stronger bond रहेगा. For example, the hydrogen bond enthalpy in hydrogen molecule is 435.8 kilojoule per mole. For a heteronuclear diatomic molecule like HCl, we have HCl bond enthalpy is delta H is 431.0 kilojoule per mole. In case of polyatomic molecules, the measurement of bond strength is more complicated. For example, water के इसमें देखो अब 2 bonds है, right? Water molecule को हम लोग कैसे denote करते हैं? HOH, like that. अब यहाँ पे एक बॉन्ड ए ब्रेक होगा, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड ए ब्रेक होगा, मतलब 2 बॉन्ड एंथैल्पी होनी चाहिए. राइट. तो 2 बॉन्ड एंथैल्पी है कि यहाँ पे देखो यस पहला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला कंसीडर करो जो मैं ब्लू से दिखा रही हूँ. कंसीडर करो कि दिस बॉन्ड इज अंडरगो ब्रेकिंग. तो पहले यहाँ ब्रेक होता है, देन इट रिक्वायर 502 किलोजूल पर मोल.
अब बाद में बचा है OH ओनली। OH से हाइड्रोजन को अलग करना है, तो डेल्टा H इज रिक्वायर्ड 427 किलोजूल पर मोल। अब आप लोगों ने सोचना चाहिए कि दोनों HO बॉन्ड है, तो दोनों के लिए OH बॉन्ड है, तो एनर्जी सेम ही होनी चाहिए ब्रेक डाउन होने के लिए। ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? नो, इट इज नॉट सेम, बिकॉज इन फर्स्ट केस H2O इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, राइट? ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, एकदम स्टेबल। उसमें से हम लोग हाइड्रोजन को अलग कर रहे और OH को अलग कर रहे, तो इट रिक्वायर मोर एनर्जी। सेकंड केस में वो OH था, ठीक है, तो दिस इज नॉट ए न्यूट्रल स्पीसीज, दिस इज अनस्टेबल स्पीसीज, और अनस्टेबल स्पीसीज में से हम लोग OH को अलग कर रहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, then it requires somewhat smaller energy than the first case. So both energies are different. और दोनों का मीन निकालते हो तो we get a net bond enthalpy of this molecule. The average in polyatomic molecule, the term mean और average bond enthalpy is used. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उसके दोनों के एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करो, then we get a mean. It is obtained by dividing the total bond dissociation enthalpy by the number of bonds broken. Yes, वही, जितने bonds break down होंगे उतने डिवाइड पे करना है. So average bond enthalpy is 502 plus 427 divided by 2. It gives 464.5 kilojoule per mole. Next is bond order. Bond order तो अभी हम लोगों ने देखा कि number of bonds in between two atoms called as the bond order. In the Lewis description of covalent bond, the bond order is given by the number of bonds between the two atoms in a molecule. Examples: in H2, O2, N2, the bond order is 1, 2, 3. In case of hydrogen, hydrogen, there is one bond. In case of oxygen, oxygen, it is denoted by O double bond O having two bonds. That means bond order is 3. And nitrogen, दो nitrogen atom के बीच में कितने bonds रहते हैं? 3 bonds. The bond order is 3. Isoelectronic molecules and ions have identical bond orders. For example, in case of F2 and O2, raised to the power 2 minus have bond order 1 and 2. CO and NO positive bond order is 3. With increase in bond order, bond enthalpy increases and bond length decreases. With increasing bond order, bond enthalpy increases. Yes, जितने ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे उतनी ज़्यादा एंथैल्पी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक करने से ज़्यादा दो बॉन्ड ब्रेक करने को एनर्जी ज़्यादा लगेगी, 2 बॉन्ड्स से ज़्यादा 3 बॉन्ड्स ब्रेक करने की ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे उनकी लेंथ छोटी छोटी हो जाती है, सो बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीजेस. So we can write bond order and bond enthalpy is inversely proportional to the bond length. Next parameter is resonance structure. अब resonance structure मतलब क्या है कि कोई भी molecule more than one structure form करता है, तो that is called as resonance structure. Consider the example ozone, O3 molecule, which can be equally represented by the structure given below. अब O3 का स्ट्रक्चर क्या रहता है? लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा होगा कि एक ऑक्सीजन रहता है, एक डबल बॉन्ड रहेगा, मिडल वाले ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से डोनेट कर देता है, और जिसके पास सिंगल बॉन्ड रहेगा उस पर 3 लोन पेयर रहेगी, और जिसके पास डबल बॉन्ड रहेगा उस पर सिर्फ 2 लोन पेयर रहेगी. ठीक है, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दिस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, दिस ऑक्सीजन. तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है वहाँ पे 3 लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर यहाँ पे रिवॉल्व हो सकती है. थोड़ी देर के बाद ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी. जैसे शिफ्ट होती है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. डबल बॉन्ड फॉर्म होने से ऑक्सीजन की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो अनस्टेबल हो जाएगी, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो वी गेट दिस स्ट्रक्चर. अब ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो गया विद 3 लोन पेयर, और ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो गया विद 2 लोन पेयर, राइट? दैट मीन्स दिस पाई बॉन्ड, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ भी रहता है सम टाइम, और ये वाला पाई बॉन्ड ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच पे भी समटाइम्स रहता है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा है डॉटेड लाइन से, और दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. द एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन शोइंग द डिलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. थोड़ी देर के लिए वो यहाँ रहेगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ रहेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर कब फॉर्म होता है? व्हेनेवर द एटम एक्वायर लोन पेयर.
The normal oxygen and oxygen double bond length are 148 picometer and 121 picometer. Yes, डबल सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसकी लेंथ ज़्यादा रहती है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि 148 पिकोमीटर है, और डबल बॉन्ड जैसी है तो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ हो जाती है, तो इट बिकम 121 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली. Experimentally, determined oxygen bond length in the O3 molecule आर सेम 128 पिकोमीटर, क्योंकि यहाँ पर कोई प्योर डबल बॉन्ड है ही नहीं है, राइट, और कोई प्योर सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये बॉन्ड ऐसे दिखाया गया है डबल बॉन्ड कि वो सब कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है, तो वो प्योर डबल बॉन्ड भी नहीं, प्योर सिंगल बॉन्ड भी नहीं, इसीलिए बॉन्ड लेंथ सेम है दोनों बॉन्ड की, दैट इज 128 पिकोमीटर. According to the concept of resonance, whenever a single Levy structure cannot describe the molecule accurately, a number of structures with similar energy position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the canonical structure of the hybrid, which describe the molecules accurately. It is called as the canonical structure. So more than one structure like that, it is called as canonical structure. This third structure represents the structure of O3 more accurately. This is also called as the resonance structure. और रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहेंगे वो उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज रहते हैं. नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. अब पोलर मतलब क्या होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवैलेंट बॉन्ड आर नॉट शेयर्ड इक्वली. मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वली शेयर्ड नहीं है. अब ये ऐसा क्यों होता है? इट हैपन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो वो अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम एंड अनदर वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इन दैट केस पोलैरिटी इज फॉर्म. सो पोलर बॉन्ड्स happen whenever atoms with large electronegative difference connect, the electrons are not shared evenly, they get taken by the anion. See here, this is HOH, water molecule. अब यहाँ पे HOH में एक ऑक्सीजन है, बीच में ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली छोटी है, ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा है, राइट. तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से खुद की तरफ पुल करेगा. ये एरो दिख रहा है आप लोगों को, खुद की आज कहाँ जा रहे, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ. हाइड्रोजन बिकम मोर पॉजिटिव नेचर, ऑक्सीजन बिकम मोर नेगेटिव नेचर, so that it produces polarity. This type of bond called as the polar covalent bond. Water is a polar molecule because oxygen is more electronegativity than hydrogen and therefore electrons are pulled closer to the oxygen. In case of hydrogen chloride, HCl के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है H प्लस और Cl के बीच में लाइक दैट HCl, राइट. अब यहाँ पे भी ये तैयार हो गया. अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचेगा, तो दिस बॉन्ड बिकम अगेन मोर एंड मोर पोलर. The bonding electron pairs will be attracted more towards the electronegative chlorine atom because electronegativity of the chlorine is more than that of hydrogen. Now the next is dipole moment. Dipole moment is related with the polarity. Now dipole moment is quantity that described two opposite charges separated by a distance, or it is the product of magnitude of negative और पॉजिटिव चार्ज. चार्जेस को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, व्हिच इज डिनोटेड बाय द U.
डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग उस पर बार दिखाते हैं। इट हैज a magnitude as well as direction. If a molecule has a dipole moment, then we call it polar. अगर डायपोल मोमेंट शो करता है तो हम लोग उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, और अगर नहीं दिखाता है तो नॉन पोलर। अब पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स हैविंग ए वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं ना, ये म्यू, तो ये अगर जीरो नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स मॉलिक्यूल इज पोलर, और अगर इक्वल टू जीरो आती है तो नॉन पोलर। अब यहाँ पे देखो HOH, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डायपोल्स तैयार हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे डायपोल्स तैयार हुए, डेल प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे, डेल नेगेटिव ऑक्सीजन पे। सो दिस इज पोलर इन नेचर। इन केस ऑफ NH3 अगेन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा खुद की तरफ, इट अक्वायर डेल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन से, तो इट अक्वायर डेल पॉजिटिव चार्ज। सो अगेन म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज आल्सो पोलर। वाटर के केस में भी दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी। इन केस ऑफ NF3 यहाँ पे लोन पेयर भी रहती है ना NH3 पे, तो वहाँ पे डायपोल अलग ही रहेगा। इन केस ऑफ NH3 हियर आल्सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन नाइट्रोजन, तो लोन पेयर के कारण एक इधर जाएगा मैग्नीट्यूड, और ये फ्लोरीन के कारण तीन नीचे आएंगे, तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। सो म्यू की वैल्यू आती है 0.240, सो इट इज आल्सो पोलर इन नेचर। अब नॉन पोलर मतलब क्या होता है? जहाँ पे म्यू की वैल्यू जीरो रहेगी। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग ए जीरो डायपोल मोमेंट, फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल, राइट? ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कार्बन से, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे, दोनों साइड से लीनियरली जा रहे सेम डिस्टेंस से, तो ये इधर से जाके कैंसिल हो जाएगा, इधर से जाके कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी कैंसिल हो रहे हैं, सो म्यू इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नो डायपोल मोमेंट, सो दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। In case of carbon disulfide, same happen. BeCl2 same happen because this is linear molecule. So that is called as the non-polar molecule. In case of BF3, अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के केस में भी वही हो रहा है। ट्राइगोनल सेम डिस्टेंस सेम मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल प्लेनर, सब मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, एंड म्यू की वैल्यू आ जाएगी जीरो। CH4, in case of CH4 same happen, CCl4 सेम, ये यहाँ से डायरेक्शन से जा रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक डायरेक्शन में कैंसिल होगा और ये एक डायरेक्शन में कैंसिल होगा। सो ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। व्हाट डिड हैपन हियर? कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखो क्या हो रहा है, इन CO2 इक्वल डाइपोल्स इन द बॉन्ड्स आर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, सो कैंसिल ईच अदर आउट and the overall molecule has no dipole moment, so it is non-polar in nature. डायपोल मोमेंट देखो, अभी जो हम लोगों ने देखा था कि HCl के केस में क्या होगा, HCl के केस में हाइड्रोजन, और Cl के केस में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इट अक्वायर डेल नेगेटिव चार्ज, इट अक्वायर डेल पॉजिटिव चार्ज। अब ये मोनो डायटोमिक की मॉलिक्यूल है, कैंसिलेशन के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों ना कुछ वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू इज 1.030, सो दिस इज पोलर। अब डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। क्यू इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन having a value 1.60217662 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and r is the distance, वो जो मैग्नेटोड का डिस्टेंस है ना, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एज द डायपोल मोमेंट, एंड हैविंग ए यूनिट कूलम मीटर, SI यूनिट, 1d equal to 3.335 into 10 raised to power minus 30 coulomb meter. कार्बन टेट्राक्लोराइड जीरो, अभी देखा था हम लोगों ने, कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज नो डायपोल मोमेंट बिकॉज all of the individual bond dipoles cancel. Similarly in case of but अगर कार्बन कार्बन
Chloroform is CHCl3. In case of CH2Cl2, methylene dichloride, or it is also called as dichloromethane. There is no same atoms. यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, इधर Cl, इधर Cl. तो कुछ भी रिजल्टेंट कैंसिल नहीं हो सकता है. रिजल्टेंट कैंसिल नहीं होगा तो दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगी एंड बिकॉज ऑफ दैट डाइपोल मोमेंट इट बिकम पोलर इन नेचर. Greater the electronegative difference between the bonded atom, greater is the dipole moment. Dipole moment of HCl, HBr, HF, HR is order of dipole moment. देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन मतलब HF is more polar than मतलब having a dipole moment than HCl bond, which is having a more dipole moment than HBr और सबसे कम है सबसे ये which is more than the HR. मतलब सबसे पोलर कौन हुआ HF than HR, क्योंकि HF बॉन्ड लेंथ छोटी है देन HR. जितना ज़्यादा साइज ऑफ कैटन आयन बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी और वो बॉन्ड मोर 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 ब्रेक डाउन होगा. इन केस ऑफ दिस cyclic compounds polarity is 1.81 D pyrrole. फ्यूरॉन के केस में 0.70 D, then 0.51 D, right? In case of propene 0.35 D, that means having a dipole moment. और अगर वेक्टर सम 0 आ जाए then it become non-polar in nature. Now this polarization is based on the Fazan's rule. अब polarization मतलब क्या होता है? Distortion of the electron cloud of an anion towards the cation. कि जैसे देखो यहाँ पे प्योरली आयोनिक पेयर है. अब प्योरली आयोनिक पेयर है. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कैटायन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना है. ये एनायन इसकी तरफ ऐसे खींचेंगे, इसकी तरफ जैसे जैसे खींचेंगे तो जो स्फेरिकल शेप है ना एनायन का वो हो जाएगा डिस्टॉर्ट. थोड़ा सा देखो यहाँ पे चेंज हो गया, that is called as distorted. So ionic bond with the partial covalent character. मतलब ये बॉन्ड था आयोनिक जिसमें पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर अपने को मिलने वाले हैं. Polarization of an ionic bond results in an ionic bond with the covalent character. अगर आयोनिक बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है तो उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर्स भी अपने को मिलते हैं. So polarization is increases here. Factors that favors the polarization of ionic bond. So ये जो polarization of ionic bond है और कोवैलेंट कैरेक्टर इन ionic bond है, it is explained by the Fazan's rule. अब Fazan's rule क्या बोलता है? According to Fazan's rule, any ionic compound contain covalent character present, more the polarization of anion, greater is the covalent character. More the polarization of anion, greater is the covalent character. More the power of polarizing power of cation, more covalent character. जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगी कैटायन की उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा और जितना एनायन का पोलराइजेशन होगा उतनी ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगी. तो कैटायन के बारे में क्या है? द पोलराइजिंग पावर, द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन. मतलब कैटायन कितना एनायन को पोलराइज करता है इस पे अपनी कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड करेंगे. एज द चार्ज साइज इंक्रीजेस ऑफ द कैटायन, मतलब पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है कि चार्ज साइज कितनी है कैटायन की. पोलराइजेशन ऑफ आयन, यही हम लोगों ने देखा था. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस एट जिस चार्ज डेंसिटी इज इंक्रीजेस, चार्ज पर वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेस. पोलराइजिंग पावर Al3 प्लस, ज़्यादा चार्ज है मतलब उसको ज़्यादा टेंडेंसी होगी पोलराइजेशन करने की, एनायन को उतना ज़्यादा पोलराइज करेगा. Mg2 प्लस ग्रेटर देन सोडियम प्लस एंड Li2 प्लस इज ग्रेटर देन Na प्लस देन K प्लस. Charge Al3 plus is greater than Mg2 plus, which is greater than Na plus. Polarizing power
एल्यूमिनियम की Al3 की ज़्यादा रहेगी देन मैग्नीशियम देन सोडियम, ठीक है। सो सोडियम देखो क्लोरीन को पोलराइज कर रहा है, यहाँ पे Al3 क्लोरीन को पोलराइज कर रहा है, क्लोरीन को पोलराइज कर रहा है, ब्रोमीन को ज़्यादा पोलराइज कर रहा है। फॉर एनाइन, अब एनाइन के केस में क्या होगा, अब एनाइन पोलराइज्ड होगा ना, दैट इज पोलराइजेबिलिटी। इन केस ऑफ एनाइन outer electrons are further away from the nucleus and electrons are less held by the nucleus and more easily polarized by the cation. Purely मतलब साइज ऑफ एनाइन जितनी ज़्यादा होगी उतने आउटर इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस से दूर रहेंगे और वो लेस हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड मोर इजीली पोलराइज्ड बाय द कैटायन। जितनी ज़्यादा बड़ी साइज रहेगी अपने एनाइन की उतने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगी उसके, और वो न्यूक्लियस से दूर है मतलब कैटायन से वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा पोलराइज्ड होंगे, राइट। सो अगर आयोनिक एनाइन की साइज ज़्यादा है तो वो उसकी पावर मोर पोलराइज्ड होती रहेगी। तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, फ्लोरीन के बीच में कौन मोर पोलराइजेबल रहेगा, आयोडीन ज़्यादा पोलराइज्ड होगा देन Br which is more polarizable than Cl and फ्लोरीन सबसे कम रहेगा, okay. So this is called as the, because of that reason we get covalent characters of a ionic compounds. So there are three factors. One is small size of cation and larger size of anion renders the greater covalent character in the ionic bond. For example, LiCl, covalent NaCl, right? Greater the charge on cation, more is the covalent character of the ionic bond. For example, covalent character of AlCl3 which is greater than the MgCl2 which is greater than the NaCl. So this is all about our chapter chemical bonding. So in this lecture what we have discussed about the molecular orbital theory, how molecular orbitals form, and after that we have discussed about the parameters of covalent bond. In that we have studied uh, bond length, bond order, bond enthalpy, bond angle, then the polarizability, that means covalent character in ionic bond, Fazan's rule, then dipole, resonance, all these are. So this is all about the chemical bonding. Here our chapter is completed. So this is last lecture of this chapter. So all the best students, do the study well.